हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉरेंट्ज थ्योरम और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करा था। एज पर सिलेबस कंसर्न, नाउ वी हैव टू स्टडी डिस्कस अबाउट द जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आपने वैसे बहुत पहले से आप जानते रहे हैं जीरोज ऑफ ए फंक्शन। जीरोज ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन ये होती थी कि value of x, if fx be a function of x, then the values of x for which fx becomes 0 are called zeros of the function. So it is very clear that if fz be a function of complex variable, a function of complex variable, z, then the values of z for which fz becomes 0 are called zeros of f of z. It is very simple definition. That is we can say the value z is equal to a is zeros of fz if f of a is equal to 0. Now we shall have to discuss zeros of analytic function. The similar way we can define the zeros of analytic function, for which let us consider fz be analytic in the domain D, and z is equal to a is any point in the domain D, then by Taylor's expansion of fz, we have f of z is equal to sigma n is equal to 0 से infinite en z minus a to the power n. Question 1, where an is unit derivative of f at z is equal to a upon factorial n. Let us, I have taken fz is b analytic in the domain D and z is equal to a is any point in the domain D. Then by Taylor's expansion of fz, we have fz is equal to sigma n is equal to 0 से infinite an z minus a to the power n, where an is an derivative of f at z is equal to a upon factorial n. Let us take a1 is equal to a2 is equal to a3 dash dash is equal to am minus 1, m is any number, is equal to 0, but am is not equal to 0. That is f a is equal to f dash a is equal to f double dash a is equal to dash dash f to the power m minus 1 derivative at a is equal to 0, but f m derivative of a is not equal to 0. Then the
expansion 1, then expansion 1 can be written as f of z is now equal to em z minus a to the power m plus am minus m plus 1 z minus a to the power m plus 1 am plus 2 z minus a to the power m plus 2 and so on. And after this, when we take z minus a to the power m from the above equation common, we can get f of z is equal to z minus a to the power m am plus am plus 1 z minus a plus am plus 2 z minus a to the power 2 and so on. And further we can write f of z is equal to z minus a to the power of m sigma n is equal to 0 to infinite am plus n z minus a to the power m plus n z minus a to the power n, sorry, here is a to the power z minus a to the power n, because when n is equal to 0 it becomes am z minus a की जगह पर हो जाएगा 1, क्योंकि z minus a to the power 0 is 1. When n is equal to 2 it is am plus 1 z minus a to the power 1, the second term, and so we can write this, or we can say z is equal to z minus a to the power m into phi z, equation number 2, where phi of a is not equal to 0 and phi z is analytic. Then in this case we can say z is equal to a is zeros of fz, analytic function fz, function fz of order m. So from above we conclude that an analytic function fz is said to have zeros of order m at z is equal to a if then fz can be written as z minus a to the power m phi of z, where phi of z is analytic and phi of a is not equal to 0. So this is all about your zeros of analytic function. Let us consider some examples. I am taking example number 1.
fz is equal to z minus 1 z minus 2 upon z square plus z plus 5. Just I am taking this example. Z minus 1, Z minus 2, Z square plus Z plus 5, it is Z. Then it is clear that Z is equal to 1 and Z is equal to 2 are the values of Z for which fz is 0. Hence, Z is equal to 1 and Z is equal to 2 are zeros of fz. Z is equal to 1 and Z is equal to 2 are zeros of fz. This time taking example number 2. Second example is find the zeros of fz is equal to z minus 2 upon z square sin 1 upon z minus 1. Let us have a solution. इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जरा इसको ध्यान से देखें. यहाँ लिखेंगे फॉर द zeros of fz we take fz is equal to 0. हम लिखेंगे कि for zeros of fz we take fz is equal to 0. This implies z minus 2 upon z square sin 1 upon z minus 1 is equal to 0. This implies z minus 2 sin 1 upon z minus 1 is equal to 0. This implies z is equal minus 2 is equal to 0 and sin 1 upon z minus 1 is equal to 0. This implies z is equal to 2 and sin 1 upon z minus 1 is equal to sin n pi, and this implies z is equal to 2 and 1 upon z minus 1 is equal to n pi. Here n is equal to 1, 2, 3 and so on. Or z is equal to 2 and z minus 1 is equal to 1 by n pi. Or z is equal to 1 plus 1 by n pi. N is equal to 1, 2, 3 and so on. Hence, z is equal to 2 and z is equal to 1 plus 1 by n pi. N is equal to 1, 2, 3 and so on are the zeros of fz. Z is equal to 2 and z is equal to 1 plus 1 by n pi. N is equal to 1, 2, 3, 4 and so on are the zeros of fz. This is the answer. So I have taken two examples for zeros of fz. We can say the values of z for which fz becomes 0, and this is way to find the zeros of a function. Let us come to the next topic. दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक है आपका सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी of an analytic function. सिंगुलैरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन. किसी भी एनालिटिक फंक्शन के सिंगुलैरिटी से क्या तात्पर्य है, ये आपको सीखना है.
पहले तो हम ये मानेंगे, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन then defined in a domain D except at z is equal to at finite number of points in D. Let fz be analytic function defined in a domain D except at a finite number of points z is equal to D, points in D. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर fz किसी डोमेन D में डिफाइंड है, इस प्रकार से डिफाइंड है कि उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. देन these points, these exceptional points are called singularity of fz or singular points of fz. Singular points of fz. In other words, we can define the points in a region D at which the function fz of complex variable z ceases to be analytic. Are called singularities of fz. Or singular points of fz. यानी कि ऐसे पॉइंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन किसी डोमेन में डिफाइंड है और उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स छोड़ के. तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर जो पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट्स जिस पॉइंट पर फंक्शन का एनालिटिक होना बंद हो जाए वो पॉइंट्स कहलाता है सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलरिटीज ऑफ एफजेड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, ये एफजेड इज इक्वल टू ले लिया जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ये हमने ले लिया. इट इज ऑब्वियस दैट fz is analytic everywhere except at z is equal to 1 and z is equal to 2. So that is fz is not analytic
at z is equal to 1 and at z is equal to 2, and hence z is equal to 1 and z is equal to 2 are singularities of fz. Are singularities of fz. In other way we can say ऐसे पॉइंट्स जहां पर कि फंक्शन का एनालिटिक होना बंद हो जाए वही पॉइंट्स कहलाता है सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलरिटीज ऑफ एब्जेक्ट. एक्चुअली अगर कोई फंक्शन, दूसरा एग्जांपल जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल नंबर 2, that fz is equal to z square plus 1 upon z plus 1 z plus 2. Here fz is not analytic at z plus 1 equal to 0 and z plus 2 is equal to 0. That is z is equal to minus 1, z is equal to minus 2 and analytic everywhere. So we can say fz is analytic everywhere except z is equal to minus 1 and z is equal to minus 2. Hence z is equal to minus 1 and z is equal to minus 2 are the singularities of fz. तो दिस इज सिंगुलरिटी ऑफ एब्जेक्ट के मैंने आपको दो एग्जाम्पल लिए और सिंगुलर या सिंगुलर पॉइंट ऑफ एब्जेक्ट के बारे में बताया. लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज. टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज में पहला टाइप है, द फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज. फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, यानी ऐसा सिंगुलरिटी जो आइसोलेटेड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि जो कोरोना के महामारी में आजकल जिसको अगर कोरोना की संभावनाएं होती है उसको आइसोलेट कर देते हैं. व्हाट इज मीनिंग बाय आइसोलेट? आइसोलेटेड का मतलब हो गया एक कमरे में अकेले, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट है दैट इज इक्वल टू ए, वो आपको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तब कहा जाएगा जब उस z बराबर a के अगल बगल में कोई दूसरा सिंगुलरिटी न मिले. यानी हम ये कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू ए अगर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तभी हो सकता है जब z इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक हो जाए. यानी z इज इक्वल टू ए के अदर देन कोई उस फंक्शन के नेबरहुड, z इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में कोई भी दूसरा सिंगुलरिटी ना मिले. तो वी कैन डिफाइन द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. The singularity z is equal to a is called isolated singularity. Isolated singularity of object if number one
fz is not analytic at z is equal to a. Number 2, fz has no singularity or singular points other than z is equal to a in the neighborhood of z is equal to a. The singularity z is equal to a is called isolated singularity of fz if fz is not analytic at z is equal to a, and the second one is fz has no singularity or singular points other than z is equal to a in the neighborhood of z is equal to a. कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में अगर हम नेबरहुड की बात करते हैं तो नेबरहुड का मतलब हो जाता है एक स्मॉल सर्किल हैविंग सेंटर ऑफ दैट पॉइंट. तो इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि z is equal to a is called isolated singularity of z is equal to fz if fz is not analytic at z is equal to a and fz has no singular points in the circle having center in the small circle having center at z is equal to a. ये दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं. इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, यानी कि z बराबर a के नेबरहुड में कोई भी फंक्शन को की सिंगुलरिटी ना मिले z इज इक्वल टू a के अलावा, तो वो कहलाता है आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक z इज इक्वल टू z अपॉन z minus 1 or we can say 1 upon z minus 1. Here it is clear that fz is not analytic at z is equal to 1 and we draw a circle having center at z is equal to 1 with very small radius. Then we find fz is analytic in the circle fz is analytic at all the points of the circle, all the points inside circle except at z is equal to 1. That means fz has no singular points in the neighborhood of z is equal to 1. In the neighborhood of z is equal to 1, hence z is equal to 1, the singularity z is equal to 1, hence the singularity z is equal to 1 is isolated singularity of fz.
Hence z is equal to 1 is isolated singularity of fz. We can consider another example, example number 2. Find the singularity, singular points of f of z is equal to 1 upon sin pi upon z, 1 upon sin pi upon 1 upon sin pi upon z. Find the singular points of fz is equal to 1 upon sin pi upon z and classify the singularity of fz. और बताइए कि कौन सी सिंगुलरिटी है fz का, चाहे विच टाइप ऑफ, ये ऐसे मैंने बना लिया क्वेश्चन. फाइंड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ fz and classify the singularity of fz. Classify the singularity of fz. Here, for the solution of this question, we can say for singularity of fz क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं. तो sin pi upon z is equal to 0. That is sin pi upon z is equal to sin n pi. N is equal to plus minus 1, plus minus 2 and so on. And this implies pi upon z is equal to n pi. N is equal to plus minus 1, plus minus 2 and so on. And this implies z is equal to 1 upon n, where n is equal to 1, 2, 3 and so on, and minus 1, minus 2, minus 3 and so on. So we have seen from above, for the value of n is equal to 1, it is 1 by 1, 1, z is equal to 1. For the value of 2, it is 1 by 2. For the value of 3, it is 1 by 3. For the value of minus 1, it is minus 1. For the value of minus 2, it is minus 1 by 2 and so on. From above, it is clear that there are infinite number of isolated singularity of fz. There are infinite number of isolated singularity of fz, which are n is equal to 1 by z is equal to 1 by n is equal to plus minus 1, plus minus 2 and so on, lies on real axis from minus 1 to plus 1. It is very clear that. But what happens with z is equal to 0? But z is equal to 0 is not isolated singularity. Of fz, because there may be
some points, there may be finite number of points in the neighborhood of object is equal to 0, at which the object is not analytic. So z is equal to 0 is not isolated singularity of object. जब यह बात आई कि कोई फंक्शन की सिंगुलरिटी आइसोलेटेड नहीं होती है तब क्या होगा, इस बात की चर्चा करने के लिए हम लोगों ने एक विस्तृत जानकारी के लिए अध्ययन किया गया था और उस अध्ययन के बारे में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि देयर मे बी सो मेनी types of, there are 3 more types of singularity which is classified by isolated singularity. जो isolated singularity से हमारे पास 3 और तरह के सिंगुलरिटीज का आविष्कार हुआ, उनमें से एक है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दूसरा है पोल और तीसरा है इसेंशियल सिंगुलरिटी. There may be 3 types of other singularities of isolated singularities. So we shall discuss in the next video. Thank you.